nobody is forcing you, nobody is snatching your money जबरदस्ती के खरीदो ये product. At the end of the day, it's you who decide if you would like to try this product for yourself or not. वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल. सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ विटामिन सी फॉर आवर स्किन एज वेल एज एक न्यू प्रोडक्ट जो अभी रिसेंटली मार्केट में लॉन्च हुआ है, which is Garnier's Vitamin C Serum. So I'm pretty sure that you guys already know about this product कि मतलब अभी कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुआ है. So I thought कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं. So if you've been following me for a while, I'm sure you would know that I'm obsessed with vitamin C as an ingredient for my skincare. इस वीडियो में मैं आपके साथ जो कुछ शेयर करूंगी ना, it all comes from my own experience and my own research and थोड़ी बहुत ऐसे knowledge about vitamin C. So सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि vitamin C आपकी स्किन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले it has antioxidant properties. It fades away any kind of hyperpigmentation as well as it reduces any signs of aging such as wrinkles and fine lines. It brightens up the skin and makes the skin more nourished and moisturized. And basically आप कह सकते हो कि आपकी स्किन की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करता है विटामिन सी. सो विटामिन सी आपके स्किन केयर में होना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, इररिस्पेक्टिव आपकी क्या एज है. स्पेशली अगर आप अपने 30s क्रॉस कर चुके हो ना, तब तो आपके स्किन केयर में होना ही चाहिए विटामिन सी. बट इफ यू आर स्टिल इनटू टीनेज और इन योर अर्ली 20s, देन गर्ल्स दिस इज द राइट टाइम टू इनकॉर्पोरेट विटामिन सी इनटू योर स्किन केयर. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस विटामिन सी सीरम बाय गार्नियर. तो सबसे पहली चीज तो दिस इज प्राइस्ड एट 449. प्राइस के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे. बट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज कि मैं इस प्रोडक्ट को अराउंड 1 वीक से यूज कर रही हूँ टू सी व्हाट इट एक्चुअली डज टू माई स्किन. एंड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद एनी स्किन केयर प्रोडक्ट, मुझे 1 वीक तो एटलीस्ट चाहिए ही होता है. एंड द ब्रांड वाज एक्चुअली काइंड इनफ टू अलाउ मी 1 वीक का टाइम सो दैट आई कैन ट्राई एंड टेस्ट दिस प्रोडक्ट. तभी मुझे ये वीडियो डालने में थोड़ा टाइम लग गया. So ये जो बॉटल है, it is a 30 ml bottle. Now before I share my experience, I would like to quickly discuss the ingredients. Now because I got this bottle in a PR, so I just got the main product and not the outer packaging. And when I searched about the ingredients on Google, I got to know that this serum has ascorbic acid, which you can say that it's like the most stable and purest form of vitamin C. Ascorbic acid जो होता है वो बहुत ज्यादा effective होता है आपकी स्किन पे and बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं. And now let me tell you the star ingredient of this Garnier's vitamin C serum, which is yuzu lemon. It has very powerful antioxidant properties. You guys can say that it's like a powerhouse for brightening the skin. Now let's quickly have a look at the packaging. It comes in a glass bottle and ऊपर ऐसे ये dropper दिया हुआ है. So the packaging is just like every other serum that we get, and it also says vitamin C 30x booster serum, which means it has 30 times more vitamin C. It's also dermatologically tested. आपके फेस पे जितने भी डार्क स्पॉट्स होंगे वो ये सीरम रिड्यूस करेगा as well as आपकी स्किन टोन को even बनाएगा. I have seen many people have this doubt that vitamin C serums are not meant to be stored in a transparent bottle. Otherwise अगर वो बॉटल हीट या लाइट के साथ कॉन्टैक्ट में आ गई तो विटामिन सी की पोटेंसी लूज हो जाएगी या फिर क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी. तो सबसे पहली चीज तो गाइज कि देयर आर एक्चुअली फ्यू अदर ब्रांड्स जिनके विटामिन सी सीरम्स come in a transparent packaging. So now if I look at the packaging of this particular product, you guys can see more than half of the bottle is actually covered with the logo. It's not completely transparent, so the packaging should not be an issue. But still, if you're not sure, you can literally store the vitamin C serum into a refrigerator. I mean, that's like the best place because it's all away from heat and light. Also, I like to use this serum twice a day. मतलब मैंने अपने morning as well as night time skin care में इस product को incorporate किया हुआ है 1 हफ्ते से. तो अगर आपको कोई भी vitamin C serum के best results देखने हैं ना, आपको दिन में 2 बार तो at least use करना ही पड़ेगा वो serum. In fact, this serum is also supposed to be used twice a day, morning and evening for best results. तो अगर आप इस product को दिन के time पे लगाते हो ना, तो don't forget to top it off with some sunscreen because don't let your skin come in direct contact with the sunlight. आप make sure करो कि आप अपने vitamin C serum को अपने skin में lock करके रखो. उसके लिए ऊपर से आपको sunscreen लगानी must है. And at night you can just go ahead and top this off with a normal moisturizer or a night cream. Now we have to use this serum on squeaky clean skin.
So for that, I'm taking some Garnier's micellar water onto a cotton pad. I'm just cleaning my face with it. You can even use a face wash. After that, I'm just going to take some drops of Garnier's vitamin C serum onto my palm. I'm just going to spread it evenly and then start dabbing it on my face as well as on my neck. Now this product claims to reduce the dark spots in 3 days, but in my case, I could actually see the visible results from 3 to 7 days because skincare products do take some time to show the results. तो इस सीरम को लगाने के बाद ना एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है आपके स्किन पे. दिस इज व्हाट माय स्किन लुक्स लाइक आफ्टर यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर 1 वीक. मेरी स्किन आई फील के थोड़ी ग्लोई लग रही है. स्किन पे एक नेचुरल शाइन आप लोग देख सकते हो, आई एम प्रीटी श्योर. एंड माय स्किन एक्चुअली लुक्स kind of healthy and more radiant. It has a runny texture. It's so lightweight on the skin कि आपके स्किन में ऐसे absorb हो जाता है. So doesn't matter if you have oily skin or dry skin. Basically सारे स्किन टाइप्स के लोग ये ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद हमारे स्किन पे ऐसा कुछ हैवी नहीं लगता. एंड वो जो फीलिंग होती है ना चिप चिप की, स्पेशली इन दिस मॉनसून सीजन. मुझे इस मौसम में बिल्कुल वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है जो हमारे स्किन को इतना ग्रीजी और ऑयली बना देते हैं. क्योंकि यार ऑलरेडी एक तो वेदर इतना ज्यादा ह्यूमिड होता है, ऊपर से हैवी ड्यूटी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाने से मुझे और ज्यादा ऐसा हैवी लगता है स्किन पे. एंड आई जस्ट कैन नॉट बेयर इट. ऑलराइट, लेट्स फाइनली कम टू द कंक्लूजन, दैट इज इफ यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट फॉर योरसेल्फ और नॉट. Okay, I'll be very honest and blunt with you guys. I have used many vitamin C serums which come for 1100, 1200, 1500 and you know what? Let me just put this across. So जो 1200 या 1500 वाले vitamin C serums होते हैं ना, उनमें भी mostly ascorbic acid ही होता है क्योंकि ascorbic acid ही ऐसा एक form of vitamin C है जो हमारी स्किन पे काफी ज्यादा जल्दी रिजल्ट्स दिखाता है एंड हमारी स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है. तो अगर आपको उन महंगे सीरम्स में भी ascorbic एसिड मिल रहा है और इस अफोर्डेबल सीरम में भी ascorbic एसिड मिल रहा है तो आई फील कि आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए क्योंकि फॉर्म ऑफ विटामिन सी इज जस्ट द सेम. आप कह सकते हो कि इंडियन मार्केट में विटामिन सी सीरम स्टार्ट ही 700 या 800 रुपए से होते हैं. तो अगर कोई ब्रांड इतने एफर्ट्स करके आपके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस में कोई विटामिन सी सीरम लॉन्च कर रही है, सो व्हाई वुडंट यू ट्राई दैट? I mean, it's just for 449 rupees and that too it's a good 30 ml bottle. अगर मैं मार्केट में जितने भी विटामिन सी सीरम्स हैं उनको और इसको कंपेयर करूं, then I feel comparatively this is way more cheaper than the other vitamin C serums that we have. अगर आपको ये वाला प्रोडक्ट चेकआउट करना है, I would definitely leave a link in the description box below. Amazon से अगर आप लोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा. अभी काफी अच्छा डिस्काउंट चल रहा है. Let me be very honest, my job is to create awareness about any new product and basically share my experience with you guys, but at the end of the day it's you who decide if you would like to try this product for yourself or not. See, nobody is forcing you, nobody is snatching your money zabardasti ke kharido ye product, but since I have this platform to share my knowledge, my experiences with products and my opinions with you guys, I feel that would somewhere help you in the future, you know. And I don't know if you remember this thing or not, but जब 3 साल पहले I guess इनके micellar waters launch हुए थे, कितना ज़्यादा hype create हो गया था, right? So even if a lot of people are talking about this vitamin C serum, it doesn't mean that the serum is not good. You would have to try this on your skin to see how it works for you. And yes, that's pretty much it for my review, my experience and everything. I really hope that this video was helpful for you. If it was, then please make sure that you give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. And yes, I shall see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.